A naught 0 0 0 2 A naught 0 0 0 3 A naught. So this is 3 cross 3 matrix. And if this operator is measured on state psi, this operator is measured on a state psi, and this psi is defined as 3, 4, 5. Let's say this is, or you can just go for 4i. Okay, 3, 4i, and 5. So I have deliberately given you the I term such that we can just make sure that our calculation should be effective. Okay. Now my question is that if A is going to measured on state psi, what will measurement with what probability? So this is my first question. If A is going to measured on a state psi, what is my measurement with what probability? So what will be the eigenvalue of, so what is the measurement? Measurement is nothing but what? Eigenvalues. So what are the eigenvalues of this operator? क्या इसके eigenvalue होंगे? A naught, 2 A naught, 3 A naught. So measurement is A naught or 2 A naught or 3 A naught. So this will be measurement. Okay. Because we can easily calculate eigenvalue of this matrix. This is diagonal matrix. So measurement is A naught or 2 A naught or 3 A naught. Now we can also calculate the eigenstate corresponds to A naught. So it is diagonal matrix. What will be eigenstate corresponds to A naught? Let's say this is phi 1. What will be this value? 1 0 0. Very good. What will be phi 2? 0 1 0. What will be phi 3? 0 0 0 0 1. Exactly. Now we have to calculate the associate probability with this particular measurement. So what will be probability with measurement of A1? So let's say this is A1, this is A2, and this is A3. And we have solved actually the equation, and that equation is nothing but A phi n is equal to An phi n. So this is all about postulates 2. This is all about postulates 1. We have calculated postulates 2. Here, this is eigenvalue and eigenstate, eigenvalue and eigenstate, eigenvalue and eigenstate. So according to postulates 2, we have to calculate eigenvalue and eigenstate. Okay. Now we have calculated according to postulates 2 here. And now we have to go for probability of measurement of A1. So what will be this? So this will be phi 1 psi mod psi square psi and psi. What you will get? 9 by 50. 9 upon 3 square plus 4i mod square, isn't it? Plus 5 mod square. So everywhere you have to take mod square. So what will be that value? 9 upon 9 plus 16 plus 25. That is 9 by 50. Okay. And similarly, we will go for probability of A2. What you can write this particular thing? So you can write phi 2 psi mod psi square, and you have psi and psi. What is this value? So if you are going to, how you will write it? You will write it 0 1 0, and this value is psi. That value is 3 4i 5, and you have to take mod square of this one. And here psi is all about your mod 3 square mod 4i square plus mod 5 square. So what is this value? This value is this value is what? 16 4i mod square upon 50. That value is 60 by 50. उधर का दिख नहीं रहा. Okay. Oh. Okay. और सर ये 16 है, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा? आयोटा मॉड ले रहा है ना, मॉड ले रहा है, इसलिए तो अच्छा, ठीक है, मैंने ठीक कहा कि मैंने जानबूझ करके वहां आई पार्ट दिया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आ रहा है? आपको हमेशा मॉड लेना है, ठीक है? आर यू कंफर्टेबल? यस सर. हाँ. Okay. Now let's try to go for text one, that is probability of measurement of A3.
What is your formula? Pi 3 psi mod square, and that value is psi. And what will be your calculation? Your calculation will be, what you will get? क्या मिलेगा आपको जरा बताओ? 25 upon 25 by 50. 25 upon 50. So I think everybody is comfortable into this type of calculation. है ना? Yes? Yes, sir. Okay. चलो. So this will be a very simple question. अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, but you have to use this thing into your calculation whenever we will come into the real physics. अब हम लोग धीरे धीरे real physics की तरफ move करते जा रहे हैं. Okay? Good. So let's try to go for one more problem. करें एक और प्रॉब्लम? का एक Yes, sir. आना चाहिए क्या आना चाहिए बताओ? सर, इस टाइप का एक प्रॉब्लम आना चाहिए. अब ये सब आसान क्वेश्चंस में आते हैं ना, सो अब ये नहीं आएंगे. ओके. क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम बिल्कुल आउट ऑफ वे रहेंगे आपके लिए, बट मैं आपको श्योर करता हूं कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन माई क्लास प्रॉपरली. ठीक है, हाँ चलो मैं म्यूट सिर्फ करके नोट्स पढ़ के जाता हूँ. बस सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, आपका हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, ओके. सो टेक अ टेस्ट ऑफ 1 मिनट. 1 मिनट का हम लोग टेस्ट लेते हैं. एवरीवन इज कंफर्टेबल है ना? देखते हैं आपने कितना सीखा और क्या किया है. सो ऑपरेटर ए इज गिवन बाय 0 1 1 0 एंड यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस. ए नॉट लिख लो, है ना? ऑपरेटर ए इज गिवन बाय 0 a naught 0, and if it is going to measure on state psi, and this state is 3 and 4i. Okay, this state is nothing but 3 and 4i. So if A will measured on state psi, what will measurement with what probability? If A will measured on state psi, what will measurement with what probability? Just do it और अपना आंसर दोगे. फटाफट करो तो. Just try to solve it. First, you have to calculate the eigenvalue and eigenstate, and you have to make sure that that eigenstate must be orthonormal, and then you can easily use postulates, isn't it? जरा देखते हैं क्या आता है आंसर. This question can come into your exam. Obviously, you will see when we will go into spin part, that will be one of the Pauli spin matrix kind of thing is there. तो ऐसे प्रॉब्लम सर हम लोग कर सकते हैं. हाँ बताओ. सर, आइगन वैल्यूज आर a naught and minus a naught. वेरी गुड, वेरी गुड. आई नीड द फाइनल आंसर. ओके, बीच का मुझसे कोई मतलब नहीं है. आई नीड फाइनल आंसर. आई एम इंटरेस्टेड इन टू व्हाट इज योर मेजरमेंट एंड एसोसिएट प्रोबेबिलिटी. ओके, चलिए कैलकुलेट कीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए. सर माइनस ए नॉट आएगा. मैडम, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, आई नीड द फाइनल आंसर. सॉल्व कंप्लीटली. ओके, yes. So what will be your eigenvalues? So you have to solve the characteristic equation. A minus lambda I must be equal to 0. So you have minus lambda a naught minus lambda, that must be equal to 0. So a naught square minus lambda square is equal to 0. So lambda is equal to a naught and minus a naught. So what will be measurement?
मेजरमेंट क्या होगा? A0 and or minus A0, either A0 or minus A0. Now this is your eigenvalues. Now you have to calculate eigenvectors or eigenstate. What are the eigenstates corresponds to A0? किसी ने कैलकुलेट किया है? 1 by root 2, 1, 1. Very good. So eigenstate corresponds to A0 is, so I can write this one is phi 1 and this will be 1 by root 2, 1, 1. And what about phi 2? 1 by root 2, 1 minus 1. Very good. 1 by Sir. root 2, 1 minus 1. Sir, ठीक है. probability of A0 is half and probability of minus A0 is half. Very good. Good. Very good. Excellent. So what you will get? So probability of A0, you can write phi 1 psi mod psi square psi and psi. So what is this phi 1? This phi 1 is 1 by root 2, 1 and 1. And what is this psi? 3, 4i. और इसका आपको क्या लेना है? मॉड स्क्वायर. और नीचे क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4i इसका मॉड स्क्वायर, है ना? So what you will get? You will get something like 3 plus 4i mod square by 2 into 25, है ना? This is this 2 and 3 plus 4i. सही लिखा हूं मैं? Yes. है ना? So what will be this mod square, everyone? 25. 25. So you have 25 by 50. That is 50% probability that you are getting A0 and 50% probability. And now we can also calculate probability of measurement of minus A0. So that value is phi 2 psi mod psi square psi psi. And this value is equal to 1 by root 2, 1 minus 1. We have 3 and 4i. We can take mod square. Again, this is 3 square plus 4i mod square. And we will again get what? 3 minus 4i mod square by 50. What is 3 minus 4i mod square? 25. 25. 25 है ना? तो हमेशा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान में रखोगे, है ना? So this value is equal to 25 by 50 is equal to 1 by 2. Everyone is comfortable? दिखाई दे रहा है ना? उस बोर्ड की सेटिंग गड़बड़ हो गई है. No. Okay. Everyone is comfortable? अब ये बताओ इस प्रॉब्लम में कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है? ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ. सर इसमें A1 कैसे बैठ जाए 1 by root 1 1 कैसे लेंगे इसमें ना करेंगे. आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने आता है क्या? हाँ सर आइगन वैल्यू निकाल ली सर. A0 और प्लस क्या अब आइगन वेक्टर निकालोगे तो कुछ ऐसा निकालोगे ना, 0 A0 A0 0. देखो मैट्रिसेस का मैंने क्लास लिया हुआ एक, यहाँ पर लिख लो आप x1 x2, यहाँ पर लिखो A0, यहाँ लिखो x1 x2. अब इसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू x1 और सेकंड वाले इक्वेशन से x1 इज इक्वल टू x2. सो व्हाट इज योर phi 1? योर phi 1 इज x1. x2 की जगह भी x1 लिख सकते हो. नाउ यू हैव टू नॉर्मलाइज इट. ठीक है ना? याद है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना सिखाया था ना? तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 by root 2. यस, मैंने a1 b1 किया था बट यहाँ a0 है इसलिए a1 b1 नहीं कर रहा हूं. x1 x2. जस्ट यू कैन गो एंड यू कैन रिवाइज योर हाउ यू कैन कैलकुलेट आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर. ठीक है, हम लोगों ने बात की थी, याद है? जिस समय हम लोगों ने टूल्स की बात की थी. यस. हाँ सर. हाँ 2 क्रॉस 2 में इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं. आप 3 क्रॉस 3 के लिए भी कैलकुलेट कर लोगे, 4 क्रॉस 4 के लिए भी कैलकुलेट करोगे. सर, प्रोसेस तो यही है क्रॉस- ना, प्रोसेस तो यही है. ठीक है, ओके. चलो, एनीथिंग एल्स? और बाकी चीजें समझ में आ रही है? सर जैसे
साई दिया है, तो जैसे हमने कल किया था साई को फाई 1 और फाई 2 की टर्म्स में लिखा था सर, इधर एक बार बताना कैसे इधर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? दिस टर्म कैन बी रिटन एज फाई 1 साई फाई 1 प्लस फाई 2 साई फाई 2। यस, और इसे आप नॉर्मलाइज करोगे, सो फर्स्ट यू हैव टू नॉर्मलाइज इट, सो देन दिस वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 25, isn't it? So now you can get phi 1 psi, निकाल सकते हो? यस सर, निकल जाएगा आपका, यस है ना? सर, सो 3 प्लस 4i आ जाएगा बाई 25। देखो ये आ जाएगा 3 प्लस 4i, यू कैन चेक, बाई रूट अंडर 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, सर आ गया समझ। फाई 1 आ रहा है ना? वेरी गुड। और फाई 2 साई बताओ क्या आ जाएगा? 3 3 माइनस माइनस 4i 4i, और अपॉन अब मैंने इसे 25। नॉर्मलाइज किया तो यहाँ फाई 2 आ रहा है। इजिली कर सकते हैं हम। बताओ मैंने क्या क्या यूज किया। अच्छा ये बताओ, आप लोग को तो अब चीजें याद हो गई होगी। ये फाई 1 और फाई 2, दिस फाई 1 एंड फाई 2 विल मेक कंप्लीट बेसिस, प्रूफ किया था हमने। अब अपनी कॉपी में देखिए, यस यस ये सर, कंप्लीट बेसिस बनाता है ना? तो अगर ये कंप्लीट बेसिस बनाता है तो किसी भी स्टेट को इसके बेसिस में लिख सकते हैं, यस या नो? यस सर, ले ही लिख सकते हैं। और यहां देखो यही नंबर मिलकर आ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर ये आपने नॉर्मलाइज कर लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब अगर आपने इसे नॉर्मलाइज कर लिया है, देन यू कैन से दिस मॉड स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A1। लुक एट हियर, देखो यहां पर एक और नंबर आएगा आपके पास, 1 by root 2 is also there, just 1 by root 2 is also there, क्योंकि phi 1 1 by root 2 लेंगे ना, so you have 1 by root 2 is also there. Okay, just multiply phi 1 psi. What is phi 1 psi? 1 by root 2 1 1, and what is psi? 3 4i 1 by root 25, है ना? तो आपका 1 by root 2 भी आएगा। Now you can see this is the exactly same number you are getting here. आ रहा है ना इसका मॉड स्क्वायर? जस्ट लुक एट हियर, आ रहा है या नहीं? And look at here, this is exactly mod square of this one. Are you getting my point? Everyone is comfortable? Yes, sir. है ना? This phi 1 is basically what? 1 by root 2 1 1. So इसे multiply करो तो 1 by root 2 का term रहेगा ना? So we have missed this thing, so we will get this one. Okay, चलो. So this is one of the very fundamental question. Basically आप जब भी measurement कर रहे हो, what you have to do? You have to calculate eigenvalue and eigenstate. That is all about postulates 2. Once you know what is your postulates 2, you can easily go for what? Postulates 3. Postulates 3 just a mathematical application है, अब बहुत easily इसको use कर सकते हो. Let us try to go for one more problem. आगे बढ़े क्या? ठीक है ना? चलो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा दूसरे नोटेशन में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? अभी तक तो हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में कर रहे थे, नाउ वी विल ट्राई टू यूज द बेसिकली किट नोटेशन, उसके नोटेशन में प्रॉब्लम करते हैं। ओके, हेलो, एवरीवन इज कंफर्टेबल? यस सर। यस सर, Okay, good. Now, operator A is defined as A phi n is equal to n square A naught phi n. So ये क्या दिया हुआ है जरा बताओगे? Where n is equal to 1, 2, 3 and so on. ये क्या दिया हुआ है जरा बताओगे? सर ए को किसी फाई एन पे Eigenvalue. ऑपरेट करेंगे तो हमें Yes, this is nothing but the eigenvalue, eigenstate. equation. ये क्या दिया हुआ है?
आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट का इक्वेशन दिया हुआ है, इजंट इट? सो ये कौन सा पॉस्टुलेट दिया हुआ है? पॉस्टुलेट्स 1 2 3 कौन सा है? एंड वाला। हाँ, postulates 2. So postulates 2 is given here. आपको कुछ निकालना नहीं है, postulates 2 यहां दिया हुआ है. And let us assume you have state psi is given, and let's say this state psi is 3 pi 1 plus 4i pi 2 plus 5 pi 4. Suppose ऐसा दिया हुआ है, and it is also given pi n pi m is equal to delta nm. इसका क्या मतलब है? ऑर्थो फिर आप ऑर्थो डेल्टा नॉर्मल. दे आर व्हाट? ऑर्थो नॉर्मल. ठीक है. नाउ my question is that now your state is given 3 phi 1 and this state is created with the superposition of phi 1 phi 2 and phi 4. किसके सुपरपोजिशन से बना हुआ है? phi 1 phi 2 and phi 4 के सुपरपोजिशन से बना हुआ है. So my question is, what will be the measurement and what will be corresponding probability? बता सकते हो क्या क्या मेजरमेंट होगा? A naught, 4A 4 naught, A naught, and 16 A 16A naught. naught. 16 है नॉट. वेरी गुड. तो या तो आप A1 को, या तो आप phi 1 को मेजर करोगे, या तो आप phi 2 को मेजर करोगे, या फिर आप phi 4 को मेजर करोगे. So what will be measurement? Measurement is either, if you are going to measure phi 1, then your measurement is A naught. If you are going to measure phi 2, then your measurement is 4A naught. देख लो, n square A naught है आइगन वैल्यू, है ना? If you are going to measurement on phi 4, then what you are going to measure? 16 A naught, isn't it? Now you have to calculate the probability of A naught. What will be that? Phi 1 9 upon psi mod square. Very good. And this value is what? Psi psi. तो phi 1 psi, phi 1 किसके साथ कपल करेगा? phi 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1. phi 1 phi 2 की वैल्यू 0. phi 1 phi 4 की वैल्यू 0. So what you will get? 9 upon 3 square plus 4i square, or 4i mod square actually, plus 5 mod square. What you will get? 9 upon 50. 50. Now अब 4A naught के लिए क्या होगा फॉर्मूला? व्हाट विल बी योर फॉर्मूला? 2 pi 2 psi. वेरी गुड. phi 2 psi, इसको phi बोलते हैं, इसको psi बोलते हैं. ओके, mod square, and here you will go for psi and psi. phi 2 is going to couple with phi 1. What you will get? 0. 0. phi 2 and phi 2 is 1. 1. So this is going to survive. So this is mod phi square. And what about this one? Again it is 0. So again we have the denominator part is always there. What is 4i mod square? Minus 16. 16. 16. 16. Have to just use 16 upon 50. सर Now, हाँ बताइए. सर क्या हम जो हमारा C1 C2 जैसे यहाँ पे 3 और 4 आए और 5 है उसका मोड स्क्वायर करके डायरेक्ट ये साई का नॉर्मलाइज लिख सकते हैं जैसे? हाँ Direct- बिल्कुल वही तो किया है. ये यही किया है ना. 3 स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही तो किया है. मतलब हमेशा हमें अगर हमेशा साई हमेशा हमेशा बिल्कुल. अगर साई लिखा हुआ है समेशन ओवर Cn phi n, और आपको phi n एंड phi m डेल्टा nm है, तो साई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? समेशन ओवर मॉड Cn स्क्वायर होगा. ओके, अब तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया. नाउ यू आर हैप्पी? यस सर. सेम चीज किया है ना. देखो यही तो किया है. 3 स्क्वायर 4i स्क्वायर 5 स्क्वायर, देन समेशन ओवर मॉड Cn स्क्वायर. डोंट वरी. ठीक है, चलो. व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16A naught? यहां क्या लिखेंगे? phi 3 लिखे या phi 4 लिखे? Pi 4 sir. phi 4.
and that value is psi, you can go for mod psi square, psi and psi. What you will get? 25 1 by by 2. 25 by 50. 25 by 50. You can make sure that 9 upon 50 plus 16 upon 50 plus 25 upon 50 is equal to what? 1. और ये इसलिए हो पा रहा है because your phi I or phi n will make complete basis. Complete basis means you have all the information of a system. Something like this. Are you getting my point? Now, if someone will ask you, what will be probability that you are getting 9A naught? 0. 0. Why? Because this psi is not written in a basis of phi 3. 9A naught is the eigenstate of phi 3. Isn't it? 9A naught किसका eigenstate है? phi 3 का eigenstate है, लेकिन इस psi को इसके basis में नहीं लिखा हुआ है. So you can easily use this concept and your 9A naught is equal to 0. Every can have- eigenstate as state, but every state is not eigenstate. Obviously. यहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है. यहां बात यह है, ये psi phi 3 के बेसिस में लिखा ही हुआ नहीं है. ठीक है? Yes. Are you sir. getting my point? Here, this psi is not written in a basis of phi 3. So probability of getting eigenvalue related to phi 3 is 0. Maybe we can make some another psi. कुछ आप वहां पर अलग psi बना सकते हो सकता है कि उस psi में आपका phi 3 हो, और तो वहां पर आप उसे मेजर कर सकते हो with some probability. Everyone is comfortable? yes sir. ठीक है? चलो. So you can see, we can use these two type of thing. Either we can use mainly functional form or some kit form, or you can use matrix form. And when we will learn Schrodinger wave equation, then we will also try to solve the problem in a functional form also. Okay? वहां पर हम functional form भी लेकर के आएंगे. Functional form में अंतर क्या होगा? अगर मान लो इसे function के रूप में दे दे तो इसे क्या करना पड़ेगा? स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इंटीग्रेट करके. उसके लिए उसे इंटीग्रेट करना. जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं. जस्ट ट्राई टू डू वन प्रॉब्लम. ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं. ठीक है, ताकि आप सारे तरह के प्रॉब्लम आप एग्जाम में आपका दिमाग में रहेगा. ठीक है, जब भी आप रिवाइज करोगे तो. अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल कम अगेन. सपोज हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m del square phi upon del x square. ठीक है, and the eigenstate of Hamiltonian, for this eigenstate the phi n is given as root 2 upon a sin n pi x upon a, where x is between 0 to a and 0 otherwise. ठीक है? Now, and this Hamiltonian is nothing but the measurement of energy. ये Hamiltonian क्या है? Measurement किसका measurement है? ये energy का measurement है. So energy operator के साथ ये लगा हुआ है. ठीक है? Now, the question is that if H will measured on state psi, or I am writing in a functional form, psi, that is a, where x is between 0 to a and 0 otherwise, what will be probability such that the measurement is, measurement is pi square h cut square upon 2ma square. What will be probability such that measurement is pi square h cut square upon 2ma square? If energy is measured on this state, what will be probability that you will measure this one?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे इसको? नाउ दिस इज माई हैमिल्टोनियन and this is my operator, this is your eigenstate. So can I find the eigenvalue? And n is also given, n is equal to 1 2 3 and so on. So can you find the eigenvalue? मिलेगा क्या eigenvalue? Yes, sir. है ना? कैसे मिलेगा? You can write h phi n is equal to let's say en pi n, है ना? ऐसे ही तो लिखोगे. h की वैल्यू हम क्या लिखे यहां पर? What is h here? Minus h cut. Minus h S h cut square upon 2m del square del x square. What is your phi n? And this is normalized, don't worry. What is phi n? √2 by a Root sin 2 upon a sin n pi x upon a. इसको आप दो बार ऑपरेट करोगे, क्या मिलेगा आपको? n square h cut square वेरी गुड. n square h cut square by pi square upon 2m 2m a square, है ना? एंड साथ में क्या मिलेगा? √2 upon a sin n pi x upon a. Yes or no? So is that you are operating the same function, you are getting the same function with the sum constant. So this will be the eigenvalue. Everyone is comfortable? Yes, sir. ये eigenvalue है ना? yes sir So what is your eigenvalue? So your eigenvalue is equal to n square pi square h cut square upon 2m a square. और n की वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? 1 2 3. So n is equal to 1 के लिए what will be your eigen function? ये किसके लिए है ये आपको कब मिलेगा? When you will get this? n is equal to When 1. n is One. equals to Then 1. n is equal to 1. So when n is equal to 1, what will be your phi 1? So probability of getting this one, can I write something like pi 1 psi mod psi square psi लिख सकते क्या? ये किसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट है? सॉरी आइगन वैल्यू है. n equals to 1. n is equal to 1, जिसे आप phi 1 लिख सकते हो, yes है ना? Yes, What is your sir. phi 1? Your phi 1 is √2 upon a sin pi x upon a. Yes? Yes, sir. ओके. नाउ अब ये तो फंक्शनल फॉर्म में है, तो सारे को हम फंक्शन में लेके जा सकते हैं. यस या नो? Yes, sir. यस. तो इसे इंटीग्रेट कर ले. कैसा है इंटीग्रेशन? इसका क्या होगा? व्हाट विल बी इन द इंटीग्रल फॉर्म? माइनस Minus इन्फिनिटी infinity to प्लस infinity इन्फिनिटी phi 1 स्टार star psi dx और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi स्टार psi dx. देख लो सही कर रहा हूं. Sir, can you repeat how we write this step, sir? This step, Yes, sir. this is nothing but the scalar product between phi 1 and psi. Yes, sir. So how you will write a scalar product in a functional form? Okay, integrable. Integrable in the form of integration. You remember your second class or first class itself? Yes? Yes, sir. Okay. So that is the same thing. सर स्क्वायर भी रहेगा ऊपर में. Yes, mod square भी रहेगा. Now let's try to go for this integration. So probability of getting pi square h cut square upon 2ma square is equal. Now this psi is basically a between 0 to a. So all value is equal to 0. So we have to integrate it between 0 to a, isn't it? And that value is √2 upon a sin pi x upon a, and this value is mod a dx, and we have to take what? Mod square, and in the denominator again you will go for
mod a square dx. Everyone is comfortable? Yes or no? So now you can easily do this integration. What is this integration? ऊपर वाला a square तो cancel हो जाएगा ना, because this is just a constant value. So this a and this a square is cancel out. So in the denominator, you have only a, because you have to integrate dx, and in the numerator you have root, and you can take 2 by a common, and here only sine pi x by a dx 0 to a, and you have to take mod square. ठीक है ना? बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos pi x by माइनस cos pi x by a, और नीचे भी क्या आ जाएगा? पाई बाई a. You have to integrate from where to where? 0 to a. Yes? और इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? You have 2 by a is also there, and you have a is also there. ठीक है? क्या आंसर आ रहा है? जरा बताओ. सर 8 by pi square. 8 by pi square, है ना? So your value is 8 upon pi square. Obviously, this is less than 1, so your answer is more or less correct. ठीक है ना? 2 टाइम हो जाएगा, पाई रहेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा. एक और a कैंसिल कहां से होगा? Obviously, mod square के कारण कैंसिल होगा, है ना? You have to take mod square, and then 8 by pi square is answer. So don't worry, this type of problem we will solve when we will try to learn, when we will learn Schrodinger wave equation, and then this type of problem will automatically we can solve. But right now you can see the concept is exactly same. If you are able to find the eigenvalue and eigenstate, you can easily solve the, you can easily use the postulates 1, 2, and 3 into different method. So we have used how many method? 3 method. First is what? Matrix 1. Another is what? Bracket notation. Bracket notation. And third one is what? As a functional form. Yes? If you have any doubt, you can just ask me. No, sir. Okay. Now, you can give me, I am just giving you one homework. This is very interesting. So, just try to do this one, and this is really very exciting to you. Okay, just try to give me this homework. Just try to solve it, and this is really very interesting. So what I have phi n is equal to what? Root under 2 upon a sine n pi x upon a, where x is between what? 0 to a and 0 otherwise. Everyone is comfortable? And let's say state psi is a, where x is between 0 to a and 0 otherwise. Now, I can write psi in a basis of or summation of Cn phi n. लिख सकते ना? Summation over n? Yes या no? Yes, sir. लिख सकते हैं? So my question is that what is your homework? Your homework is find the value of Cn. Find the value of Cn. है ना? आपको Cn की वैल्यू निकालनी है. And before that, you have to normalize it. So you have to first normalize it. So first question is normalized psi. And second question is find the value of Cn मिल जाएगा आपको, and you have to use normalized psi here.
कैसे निकालोगे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ C1 Cn? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एन स्टार साई dx dx, बट इंटीग्रेशन बेसिकली कहां से होगा? 0 to 0 to a a. a आप इसे नॉर्मलाइज कर दोगे तो a की एक सुटेबल वैल्यू आ जाएगी, है ना? Yes, yes. एंड देन यू हैव टू गो फॉर, वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? परमप्रीत. परमजीत, वेरी गुड परमजीत, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है एंड यू विल सरप्राइज्ड दैट अभी जो हमने क्वेश्चन किया था p स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर, क्या आया था? 8 अपॉन पाई स्क्वायर ना। सो यू विल सरप्राइज द वैल्यू ऑफ C1 विल बी कितना होगा? रूट अंडर 8 अपॉन पाई, सॉरी रूट अंडर square. 8 अपॉन पाई, root under 8 upon pi. You will find, I think you will get C1 as this number if you are normalizing the state psi. Okay? Are you getting my point? Anna? Just try to do this. Okay? Just try to do this. Okay. So let's go for next postulates. This is your postulates 4. यहाँ तक clear है? Everyone is comfortable? चलो, let's go for postulates 4. Just try to do practice, है ना? अब आप अपने बुकलेट को भी एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हो. Just you can use all this thing and try to go for postulates, sorry, second tutorial also, first tutorial के बाद, है ना? You can just try to solve all this thing. Anyway, what is your, now you can see, it's a very interesting. Again, I am going for this problem. Let's say I am just talking about psi is equal to, we have solved this one. So this is basically 3 phi 1 plus 4i phi 2 plus 5 phi 4. Okay, we have solved this one. And what is my operator A? A phi n is equal to n square a naught phi n. We have solved this problem now. Suppose this type of situation is there. What is my measurement? My measurement is basically, if we are measuring on a state psi, the measurement is a naught, 4a naught, and 16a naught. The probability of measurement of a naught is basically 9 upon 50. The probability of measurement of 4a naught is basically 16 upon 50. We have solved it, है ना? The probability of measurement of 16a naught is basically 25 upon 50. What is meaning of that? What is meaning of that? Sorry. What will happen? You can get either a naught or 4a naught or 16a naught. अब ये बता सकते हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके आने की है? 4a naught. 4a naught. Sorry, 16a naught. 16 है ना सर. 16a naught की 50% प्रोबेबिलिटी है ना? देखो तो 25 सबसे ज्यादा इसी में तो है नहीं? Means out of 50 time, if you are doing this experiment again and again, out of 50 time you are getting 16a naught, and out of this 15 time on an average you are getting 4a naught, and out of 15 time on an average you are getting 9a naught. This is all about your distribution of this measurement. Now, what postulates 3 said? Postulates 3 is very interesting. Now just tell me this experiment. Now just tell me about this experiment. If we are going to toss our coin, what can be possibility? Head or tail. Head or tail. Head or tail. So now if we want to measure on this state psi, what can be possibility? A naught, 4a naught, or 16a naught. Okay. So these can be possibility. Now, once you will get the head on a face of coin, then at that particular point of time,
if any another person is going to see the coin, what he will see? Head only. Head only. Are you getting my point? Yes. And again, if you are going to do the next toss, can you give the guarantee that you are getting the head only? No. No. So now this is your postulates 4. This is very interesting. Now postulates 4 will tell you state. So what you have? You have a state psi, you have eigenvalue and eigenstate. Okay, and you have probability of measurement of eigenvalue from the postulates 3. Now, if someone will measure on state psi, suppose he give, and now what is your postulates 4? What will be state? So postulate 4 will tell you state just after measurement of eigenvalue an. So this is just trying to tell you what will be state just after measurement of, if you are getting an. You can get either of eigenvalue, but suppose you are getting an, then your psi will collapse in a direction of phi n. आपका psi किस डायरेक्शन में आपका कोलैप्स हो जाएगा? In a direction of phi n. Are you getting my point? Now, suppose this is your state psi. What can be possible measurement? A0, 4A0, 16A0. Suppose someone is getting 4A0. Suppose someone is getting 4A0. Then at this particular point of time, your psi will be collapse in direction of Phi 2. Phi 2. phi 2. Are you getting my point? This is all about postulates 4. And suppose some another operator is going to measure at this particular point of time. Simultaneously, he is just trying to measure it. Then he will measure on state psi. But actually at that particular point of time, state psi is collapsed into which direction? Phi 2 direction. So he will measure what? Actually phi 2. Are people going to convince? सेम थिंग, जस्ट आपने टॉस किया, टॉस करने के बाद हेड आया. सपोज कोई दूसरा पर्सन भी देख रहा है तो उसको भी तो हेड ही नजर आएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो सेम थिंग, यू कैन टॉस दिस 3 फेस कॉइन, you can get either A0, 4A0 or 6A0. You are getting 4A0. That means all other are insignificant that point of time. Your psi is basically equivalent to phi 2 at that particular point of time. And at that particular point of time, if someone is going to measure with another operator, he will not measure psi, rather he will measure what? Phi 2. So here delta t, the time is not going to evolve. The delta t tends to 0. Time is not going to evolve. But if time is going to evolve, what will happen? Your state again will be reoriented in a original basis, that is phi 1, phi 2 and phi 4. So if time is going to evolve, again your psi will be in a basis of phi 1, phi 2 and phi 4. For example, if you are going to do the another toss, then what you will get? You will get again either head or tail. Are you getting my point? It is very difficult to understand. Don't worry. So I will take a pause. You can think about these postulates. We will discuss these postulates in tomorrow's class, and we will also discuss the main postulates, that is postulate 5, Schrodinger wave equation.
Okay, first we will take the doubt of this one, postulates 4. I know this is very, very confusing postulates, and it is very tough to explain, and it is very tough to understand also. So don't worry. And this postulates is not for the JAM examination people. Okay, you can avoid these postulates. But yes, if you can understand, it's good. But obviously, for other exam, TIFR, JEST, you can use this postulates is also Sir, important. Yes. so here two measurements are being taken at the same time. First you have measured A, and then you are measuring the B. Are you getting my point? First you have Okay, measured sir, A but and you see the outcome, and then you are measuring the yes, B. sir. Are you getting my point? Okay, So sir. this is going to Means happen. after After measurement of A, you are not allowing your state to evolve, and then you are measuring B. Okay? okay, sir. Okay, sir. यही है क्या वेव फंक्शन मेजरमेंट जब लेते हैं क्वांटम में तो कोलैप्स हो जाता है Exactly. That is collapsing in a direction of phi n. Yes. Apparent Exactly. Exactly. नहीं है साइंटिस्ट Exactly. Okay? Exactly. Okay. So I think I should stop here, and we will just go for next class. है ना? कुछ बच्चों का next class भी होगा. So we will go for next class. है ना? So today we have stopped quantum mechanics at this point of time. So I think you should revise all this problem at least. है ना? सिर्फ इतने प्रॉब्लम भी रिवाइज करते रहोगे तो एग्जाम में सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे. द थिंग इज दैट ये सारे रिकॉल एग्जाम में नहीं हो पाते हैं. सो डोंट बर्डन कि हम बाद में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे. अभी अभी इसको करते जाइए. नेक्स्ट 3 and 4 डे में ही सारे कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे. फिर एवरीथिंग इज वेरी सिंपल टू यू. है ना? बहुत ही आसान होगा. बिल्कुल केक वॉक की तरह हो जाएगा आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? कोई सजेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर एग्जाम में नहीं आ रहा है किसे समझ में नहीं आ रहा है? ओके, चलो कल बात करते हैं. है ना? थैंक यू. Thank you, sir. सर